हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 20 MCQ क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन को मैं रीड करूंगा, उसके बाद फिर 5 सेकंड के लिए पॉज करूंगा जिसमें आप आंसर सोच लीजिएगा। उसके बाद फिर मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर अफर्मिंग केयर डिस्कस्ड इन द सोर्सेज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर करेक्टली लिस्टेड एज फॉर्म्स ऑफ GAC इंटरवेंशंस। ऑप्शन नहीं, ये क्वेश्चन ही है। 1, सोशल इंटरवेंशन। 2, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। 3, मेडिकल केयर। 4, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। तो इसके जो ऑप्शन है वो है A, 1 and 2 ओनली। B, 2, 3 and 4 ओनली। C, 1, 3 and 4 ओनली। D, 1, 2, 3 and 4। आंसर है डी, 1, 2, 3, 4 सभी के सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज व्हाट फाइनेंशियल बैरियर्स मेक्स जेंडर अफर्मिंग हार्मोन थेरेपी इनएसेसिबल फॉर मैनी इंडिविजुअल्स इन इंडिया। ऑप्शन है ए, GAST कॉस्ट 2 to 8 लाख एनुअली, कॉस्ट 50,000 rupees 50,000 to 70,000 annually. C, GAST is not classified as medical necessary by the WHO. D, the cost is covered completely under the Ayushman Bharat scheme. आंसर है B, GAST cost 50,000 to rupees 70,000 annually. Next question, which international organization classifies gender affirming care as medically necessary, not elective or cosmetic, due to its direct impact on well-being? Option है A, United Nations Development Program. B, World Health Organization. C, National Medical Commission. D, The Lancet. आंसर है बी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग रिपोर्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वर्कफोर्स इन इंडिया इज अप्रॉक्सीमेटली एंगेज्ड इन द इनफॉर्मल सेक्टर्स। ऑप्शन है ए 50%, बी नियरली 65%, सी अप्रॉक्सीमेटली 90%, डी 75%। आंसर है सी, अप्रॉक्सीमेटली 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the key national initiative recommended by the Niti Aayog report Roadmap on AI for Inclusive Societal Development to integrate social security skilling and livelihood linkage for informal workers? Option है A, Skill India 2.0 mission. B, National Career Service Expansion. C, Launch of Digital Shram Setu mission. D, Universal Social Security Account. आंसर है सी, लॉन्च ऑफ डिजिटल श्रम सेतु मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द स्किल डिवाइड फेस्ड बाय इंडियाज इनफॉर्मल वर्कफोर्स अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज। ऑप्शन है ए, ओनली 12% ऑफ इनफॉर्मल वर्क लैक डिजिटल लिटरेसी। बी, अराउंड 70% ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स लैक बेसिक डिजिटल लिटरेसी। C, women constitute less than 35% of informal labor. D, informal sector productivity matches the formal sector. Answer है B, around 70% of informal worker lack basic digital literacy. Next question, the concept of breathable art was inaugurated by which ministry in India to raise awareness अबाउट एयर क्वालिटी। ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। डी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आंसर है सी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग pollutants आर स्पेसिफिकली मेंशनड एज being filtered by the plants used in the breathable art living installation? ऑप्शन है ए सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ओजोन, सी फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजीन, डी पर्टिकुलेट मैटर 2.5 ओनली। आंसर है सी फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2025 was awarded for the creation of metal organic framework. Which combination of scientists received this award? ऑप्शन है ए अल्फ्रेड नोबल, सुसुमु कितागावा एंड ओमार यागी, बी रिचर्ड रॉबसन, सुसुमु कितागावा एंड ओमार यागी, सी ओमार यागी, रिचर्ड रॉबसन एंड अल्फ्रेड नोबल, डी सुसुमु कितागावा, अल्फ्रेड नोबेल एंड रिचर्ड रॉबसन। आंसर है बी रिचर्ड रॉबसन, सुसुमु कितागावा एंड ओमार यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डेवलपमेंट ऑफ metal organic frameworks, which scientist is credited with stabilizing the framework and developing reticular chemistry enabling metal organic framework to capture water from air? ऑप्शन है ए सुसुमु कितागावा, बी रिचर्ड रॉबसन, सी एल्फ्रेड नोबल, डी ओमार यागी। आंसर है डी ओमार यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क? ऑप्शन है ए क्रिस्टलाइन मटेरियल मेड बाय लिंकिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विथ नोबल गैसेस, बी स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग मेटल एटम्स विथ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू क्रिएट अल्ट्रा पोरस 3D स्ट्रक्चर्स, सी सॉलिड स्ट्रक्चर्स कंपोज्ड सोलली ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स यूज्ड फॉर कैटालिसिस, डी flexible polymer chains used primarily for carrying medicine. आंसर है बी structures formed by combining metal atoms with organic molecules to create ultra porous 3D structures. Next question, India's first integrated national labor and employment policy aiming to create a fair, inclusive and feature ready world of work is titled? ऑप्शन है ए विकसित भारत 2047 लेबर कोड, बी ड्राफ्ट नेशनल लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी श्रम शक्ति नीति 2025, सी एम्प्लॉयमेंट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी, डी नेशनल कैरियर सर्विस मिशन 2025। आंसर है बी ड्राफ्ट नेशनल लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी श्रम शक्ति नीति 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टारगेट फॉर फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन सेट बाय द ड्राफ्ट नेशनल लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी श्रम शक्ति नीति 2025? ऑप्शन है ए 55% बाई 2047, बी 35% बाई 2030, सी 50% बाई 2025, डी 40% बाई 2035। आंसर है बी 35% बाई 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल लॉन्च्ड? ऑप्शन है 14 अप्रैल 2016, बी 9 अक्टूबर 2025, सी 1 अप्रैल 2014, डी 27 अक्टूबर 2025। आंसर है A 14 April 2016। Next question, following the recent expansion of the national agricultural market (ENAM) by adding 9 new commodities, what is the new total number of tradable items mentioned in the source? Option है A 9 items, B 100 commodities, C 247 commodities, D 240 commodities। आंसर है सी
247 commodities. Next question. Which two countries jointly initiated the International Solar Alliance during the COP21 Climate Summit in Paris? Option है A इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट, बी इंडिया एंड जर्मनी, सी इंडिया एंड फ्रांस, डी फ्रांस एंड यूनाइटेड स्टेट्स। आंसर है सी इंडिया एंड फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस लोकेटेड, मेकिंग इट द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड इन इंडिया? ऑप्शन है ए न्यू दिल्ली, बी मुंबई, सी गांधीनगर, डी गुरुग्राम। आंसर है डी गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी फाइनेंशियल एम ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस बाय 2030? ऑप्शन है ए टू लिवरेज $200 million इन रिस्क गारंटीज, बी टू मोबिलाइज $1 trillion इन सोलर इन्वेस्टमेंट, सी to install 100 gigawatt of solar capacity globally, D to provide loans to 124 member countries. Answer है B to mobilize $1 trillion in solar investments. Next question. The AIM 120 AMRAAM advanced medium range air to air missile provides a fire and forget capability. It is primarily developed by the US Air Force and which company? Option है A Lockheed Martin, B Northrop Grumman, C Raytheon, D Boeing. Answer है C Raytheon. Next question. The Navi Mumbai International Airport is described as India's largest greenfield airport project. It was developed under a public-private partnership between Adani Airports Holdings Limited and which entity? Option है A Mumbai Metropolitan Region Development Authority, B Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, C City and Industrial Development Corporation, D Ministry of Civil Aviation. आंसर है सी सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।